Hi guys, the question for today is a moving coil galvanometer having a resistance of G produces a full-scale deflection when current Ig flows through it. This galvanometer can be converted into first one, an ammeter of range 0 to I0 such that I0 is greater than Ig by connecting a shunt resistance of Ra to it. Second, into an voltmeter. So they have given basically a conversion of galvanometer into an ammeter and the voltmeter. Okay, and they have specified the corresponding the values also. So based on this we need to solve the problem. Okay, and we need to choose which of the options A, B, C or D is correct. First let us try to analyze the diagrams. So let me bring in the circuit diagram for both the conversions of the galvanometer into an ammeter and voltmeter and so on. Okay, so you can see I have brought in the image, so the figure. So this is basically the figure where the conversion of galvanometer to ammeter happens and conversion of galvanometer into an voltmeter. Okay, so first one is basically when a galvanometer is used as an ammeter, the shunt is used in parallel. So basically shunting happens in parallel here. Let me show it here. So here shunt resistance Ra. So Ra is basically the shunt. Okay, the shunt resistance. You can see conversion of a galvanometer to ammeter. So here it is ammeter. So it's basically the galvanometer is converted to an ammeter here. That is the first one, first image or the first figure, and second image you have the galvanometer is basically converted into an voltmeter. So these are the two diagrams which we need to understand with respect to the conversions. Now, when you convert a galvanometer to an ammeter by shunting in parallel, what happens? The effective resistances are going to be in parallel, right? The galvanometer resistance and the uh, shunt resistance, both are going to be in parallel. So accordingly, when we apply the loop law, we will get the equations as Ig is equal to Ig times G is equal to I naught minus Ig times Ra. Okay, this is what we will get. So now let me find out Ra. Just rearrange for Ra. What is Ra from here? By simple rearrangement, we get Ra is equal to Ig upon I naught minus Ig times capital G. So let me mark this as equation number 1. Okay, this is for galvanometer to ammeter. We have found out the relation. Similarly, when galvanometer is used as an voltmeter, we get the relation as Ig, because both are in series combination, so it is be Ig times G plus RV, where RV is the resistance of the voltmeter. Okay, is equal to G times I naught. Okay, so similarly, let us find out what is RV. Rearrange for RV here. We get RV is equal to I naught minus Ig divided by Ig, the whole multiplied by G. So let us mark this as equation number 2. So we have two equations. According to the options, we need to find out what is RARV. So first multiply RARV and find out the relation. So let us do that. So RA times RV is equal to, so I multiply, that is nothing but multiplying 1 into 2. So let me multiply. So if I multiply that, I can see that G and G is is there. So you will get G square. Okay. And what about I and upon I naught minus Ig and I naught minus Ig upon Ig? Both these terms will get cancelled out. Okay. So it's only G square. So RARV is G square. Okay. This implies RA times RV is equal to G square. What about the other term they are asking? It is RA upon RV, right? So RA upon RV, the second one, let us do that. So RA upon RV, that is basically 1 upon 2. So if I do that 1 upon 2, what happens? In that case, G is going to get cancelled and I will get the relation between I
Ig and I naught minus Ig. So we can see that we will get Ig upon I naught minus Ig the whole square. Both will get multiplied with itself. So therefore Ra upon Rv is equal to Ig upon I naught minus Ig the whole square. So according to that, which option is correct? So option B is correct, right? See, Ra times Rv is G and Ra upon Rv is Ig upon I naught minus G the whole square. So option B is correct. Thank you, students. Hi students, the question for today is a thin strip of 10 centimeter long and there is a U-shaped wire of negligible resistance is connected to the spring of spring constant 0.5 Newton per meter. Okay, we can see the figure. Now the assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla and the strip is being pulled from its equilibrium position and it is released. The number of oscillations it performs before its amplitude decreases by a factor of E is given as N, and if the mass of the strip is 50 grams, okay, and its resistance is 10 ohm which is negligible, and they're asking us to find out the value of N. Okay, so we should find out what is the value of N. Okay, because it's an MCQ question, we are given with 4 options, we need to find out the correct option. Okay, so to solve this problem, there is a very simple formula that we need to use, which is T naught is equal to 2 pi times under root m upon k. Okay, the k is the spring constant. M is nothing but the mass. Mass is given as 50 grams. Spring constant is given as 0.5 Newton meter. So I'm substituting all those things. Okay, so let me substitute 50 grams. Okay, upon spring constant is 0.5. Okay, so I'm substituting these values, Newton per meter. Okay, so I'm substituting the value. I'm going to simplify as per SI unit. So I'm converting 50 grams to kilograms, we all know that. Okay, and then simplifying, so I will get the value of T naught is equal to 2 pi upon root 10. Okay, this is what we will obtain upon simplification. Now we already know that the equation which relates the amplitudes, A is equal to A naught times E raised to minus T upon gamma. Okay, this is the relation. Now, for A is equal to A naught upon E, the T value is gamma. That is what it means. Okay, let me write down here. For the amplitude A is equal to A naught over E, okay, the T value should be equal to gamma. Okay, so I am writing T is equal to gamma, which is equal to 2m by B. This is the relation. So which is equal to 2m upon, now in the place of B, I am substituting the magnetic field. So relation, so B square I square upon R. Okay, so upon R, so substituting all the values and simplifying, I will get it is 10 raised to 4 seconds. Okay, I will get the values 10 raised to 4 seconds. So therefore I can find out number of oscillations. So number of oscillations T upon capital T naught, so is equal to, that is nothing but 10 raised to 4 upon 2 pi under root 10. Okay, so this value is approximately equal to 5000. So 5000 is nothing but the number of oscillations per time period. So the answer is option C. Thank you, students. Hello everyone, the question says that the mean intensity of the radiation on the surface of the sun is about 10 raised to power 8 watt per meter square. The RMS value of the corresponding magnetic field is close to. So in this question we have to find out the B RMS value, that is root mean square value of magnetic field. Now we know intensity, that is I equals to epsilon naught C into E RMS square. So now we also know value of ERMS equals to C into my B RMS. Now replace this value of ERMS with C B RMS. So we get I equals to epsilon naught C, and here C square, it will become C cube B RMS square. So now on solving this value, we get B RMS will be equals to square root of I upon epsilon naught C cube. Now manipulate the value.
So after manipulation of the value, it is 10 raised to power 8. This value is 8.854 into 10 raised to power minus 12 into 3 into 10 raised to power 8 whole cube. Now on solving this value, we get value nearly equal to 10 raised to power minus 4 Tesla. So it is a value of BRMS. That is option C. Hence option C is right. Hello everyone, the question says that a rectangular coil of dimensions 5 cm into 2.5 cm with 100 turns carrying a current of 3 ampere in the origin and in xz plane. A magnetic field of 1 Tesla is applied along x-axis if the coil is tilted through 45 degree about z-axis. Then the torque on the coil is. So in this question we have given a rectangular coil of dimension 5 cm into 2.5 cm. First we will find out area. So area of coil will be equal to 5 into 2.5 centimeter. So that will be equal to 12.5 centimeter square. We can write this value as 12.5 into 10 raised to power minus 4 meter square. Carrying a current that is I equals to 3 ampere in origin and in xz plane. So coil line in xz plane. So this is x-axis. So suppose x and y-axis. So we will make its diagram. X-axis, y-axis, and this is z-axis. So coil will lie in xz plane. So this is x, this y, and this z. So coil line in this plane, and the coil is tilted through 45 degree about z-axis. So in this question, coil is tilted through 45 degree. So like this. So suppose this coil here. Suppose. So we have this coil making an angle 45 degree. Now we have to find out torque on the coil is. So formula to find out torque, that magnitude of torque will be equals to cross product of M cross B, where M is magnetic moment, B is magnetic field. So we can write this value, torque will be equals to Ni into A. Formula to find out magnetic moment is Ia, N is number of turns, into B magnetic field into sine 45 degree. Now on solving this equation, so put the value. Now a rectangular coil having 100 turns, so N is 100, current is 3 ampere, area is 12.5 into 10 raised to power minus 4, and value of sine 45 is 1 upon root 2. On solving this value we get 0.27 Newton meter. So it is our answer. Hence torque will be 0.27 Newton meter. That is option D. Hello everyone. The reason between y equals to 0 to y equals to d, constraint of a magnetic field B vector is equals to B j cap, k cap. A particle of mass m and charge q enters the region with velocity this much, and d here is given as mv by qb. Acceleration of the particle at the point of its immersion at the other side is what? So let us understand the question first. So it is given that from y equals to 0 to y equals to d, there exists a magnetic field. So let us draw the x and y axis first. So this is the x axis and this is the y axis and this is z axis. So along z axis there is a magnetic field B k cap. So I will write with. Now from y equals to 0 to y equals to d, there exists a magnetic field, this, right, B, and this D is equals to mv by 2 qb, right? So this will be the value of D. So if a particle enters with velocity v, right, and you could see the region, a particle of mass m and charge q enters the region, and if the acceleration of the particle at the point of its immersion is to be calculated, right? So
it will enter. Now the velocity of the particle is given here, v I cap. So it is said that it enters into the region and travel through this region, right? So let's suppose it enters from this point, because if the particle will enter through this point, it won't be able to enter, since there the magnetic field will be in downward direction, and because of that it won't be able to enter that region, right? So the velocity here is v I cap, and the magnetic field you could see is along the z-axis. So the magnetic force will be along the v cross b direction. So v cross b, you could see, you could if you curl the finger from v to b, you will get the magnetic force in downward direction, this, and this force will be q v b. Now it will travel in a circular path, and if you want to find out the radius of this circular path, you can use the formula of centripetal force. So I will write the magnetic force here, that is QVB, is acting as the centripetal force, that is this, right? So from this formula you will get the radius as, this V will get cancelled out, and you will get the radius as mv by qb, right? So from this point, this distance will be mv by qb, and it is given in the question that this distance is mv by 2 qb, right? Okay, so it will be a circular motion from here to here, right? So at this point, if the velocity is v in this direction, right, since the velocity magnitude won't change, right, so you could see here this radius is r, then this length is, right, this length is r by 2, and again this length is also r by 2, right? So you can find out this angle theta, right? And if I talk about the acceleration, so the only acceleration here will be the centripetal acceleration. So I will write here only centripetal acceleration will exist here, right? Okay, so you can see here we already calculated the centripetal acceleration. The centripetal force is qvb, and that is equals to mv square by r, and we got the r is this. So if you will put the value of v square by r, you will get the centripetal acceleration, and the v is this, and r here is this. So this will be the acceleration, that is, and now it will act toward the center, right? So now if you see the diagram, it will be acting toward the center like this, and this angle is theta. Now you could break this into components. So if you see here, this let's suppose I say AC. So AC is acting at an angle theta, so this component will be AC cos theta, and this will be AC sine theta. Now you can calculate the value of theta. You can see here the sine theta is r by 2 by r. So I will write sine theta here is r by 2 by r, that is half. So from here you will get the angle is equals to 30 degree. So you can just put the value here to get the direction. So you'll get the acceleration direction as, so I will write, you can see already this is directed toward left, so I will put a negative sign, and cos 30 degree I cap minus sine 30 degree j cap, right? So here the cos 30 degree is minus root 3 by 2 minus half j cap, and into this. So this will be the acceleration
of the particle when the particle will take a exit from the region. Thank you. Hello. So the question is, which of the following field pattern given below is valid for electric field as well as for the magnetic field? Okay. So we have to find which one is for both, which is for magnetic field and electric field. As we know that in the case of the magnetic field, the field line should be in the closed loop. They form the closed loop. Okay, so when you check the option A, here you can see this. Basically, it will represent as a when you place any positive Q charge. So here the electric field will be something like this. Okay, so it is only represent the electric field lines. Okay, as you can see this, they are not terminating. Okay, so this will only represent the electric field line, this will not represent the magnetic field line, means this option is incorrect. Similarly, in the option B, it will represent like when you place minus q charge, so the electric field lines are something like this. Okay, so it is also represent only electric field line, they will not represent the magnetic field line. This option is incorrect. But when you check the option C, here you can see this, the field lines are circular type. Okay, this is happens only when you place a wire. Okay, let us talk about when you place a wire in a plane. Okay, so when we place a wire in a plane, okay, let's say this is the wire. Okay, if we place this wire in a plane, okay, something like this, here it is placed. Okay, so here the magnetic field due to this wire, okay, the magnetic field line that is formed due to a current carrying wire. Okay, that is what, that is something that is something like this. Okay, accordingly here they are forming a closed loop lines. Okay, they will not intersect each other. So this is formed by a current carrying wire. Okay, if you place a current carrying wire in a plane of paper, okay, so this is happens. So and due to this magnetic field, basically if the magnetic field is the varying, if the magnetic field is the varying, okay, so varying means like if it is changing with the time. Okay, so if it is changing or the varying, so due to this magnetic field the electric field is also induced. Okay, and this has a minimum a less value, a minimum value according to as compared to the magnetic field. Okay, so this electric field has a field lines which is also formed something like this as the magnetic field is formed. Okay, magnetic field lines is formed. Okay, so basically what the concept is, whenever there is a change in magnetic field, okay, magnetic field, whenever there is a magnetic field is varying, due to which the electric field is also induced and the field lines are something like this. Okay, so this option is the correct answer. And when you check the D option, it is like here the bar magnet is placed, or you can see this, the field lines are here. Okay, so basically this is for only this bar magnet, this is only represent the magnetic field, so this is also incorrect. So C option is the correct explanation, correct answer of our question. Thank you. Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? Two infinitely long straight wire lie in the xy plane along the lines x equals to plus minus r. Now the wire is located at x equals to plus r, carrying a current of I1, and the wire at x equals to minus r carries a current of I2. Now there is also a circular loop of radius r, and the center is 0, 0, root 3r, and it is in a plane parallel to the xy plane. Now this loop carries a constant current in the clockwise direction seen from the top, okay, above the loop. Now the current in the wire is taken as to be positive, it is if it is in the plus j direction. Now which of the following statement regarding the magnetic field is true? So there are some statements. So first of all, what we should do, we should draw our diagram. So a diagram which draw our coordinate axis. So let's say this is our this y direction plus y, this is our x direction, and let's say this is our j direction, z direction. Okay, now there is a loop, so we just draw a loop, so it is placed in the this z axis. Okay, now there are two parallel wires, so one is wire is like this and another wire is like this. Okay, so the distances which are given here is given as to be r by 2, 0, 0, because it would be lying here passing through this point, and it would be minus r by 2, so it is minus r by 2, 0, 0. Okay,
Now the center of the loop, we are denoting the center as C. So the C, we are just writing the coordinate here. It is 0, 0, root 3 r. So this is the coordinate of this point. Now what is to be done? Here the current is given as to be, this is the wire 1. We call this as wire 1. We call this as wire 2. And we call this as our loop L. Okay. Now the current here is I1. Let's say the current here is I1 in this direction and I2 here is I2 in this direction. Now in the first part, it is given that if I1 is equals to I2, then B cannot be 0 at 0 at the origin. We need to find this. We need to verify this. So in the A case, now if I1 is equals to I2, so if I1 and I2 are equal, so this is the origin, this is 0, 0, 0. So the magnitude of magnetic field B1, magnitude wise, this would be equals to B2. We know this. Due to wire 1 would be equals to wire 2 because the distance are equal and the current is also equal. It would be mu naught I divided by 2 pi r. Okay. Now what is the direction? Due to wire 1. So due to wire 1, we just write due to 1. What is the direction? So the direction, B1 direction would be in the plus k cap direction. It would be in the plus k cap direction. And due to 2, it would be B2 would be in the minus k cap direction using right hand thumb rule. So what will happen? So the B net due to wire, this would be equals to 0. B net, there is no magnetic field due to wire. So that means our B net for this system would be equals to only due to magnetic field due to loop, and magnetic field due to loop is not equal to 0. So we can say that the first option is correct, that B cannot be 0 at the origin when I1 is equals to I2. Why? Because the reason being magnetic field due to this and this is cancelling, but it is existing due to the loop. Now in the second option, if I1 is greater than 0 and I2 is less than 0, B can be 0 at the origin. So if I1 is greater than 0 in the B part, we write I1 is greater than 0 and I2 is less than 0. Okay, now what would be the value of B1 and what is the direction? Basically, we need to first check the direction. So I1 is greater than 0. That means I1 is flowing like this. So magnetic field will be in the plus k cap direction. We write the value as to be k cap direction. Now, the magnetic field I2 is less than 0. So the direction of current will be in this direction. So the magnetic field would be in the plus k cap direction using right hand thumb rule. So we can say that it would be in the k cap direction. Now the magnetic field due to loop. So the current, if we are seeing from the above, it is in this direction. Current is flowing like this. Okay. So that means magnetic field at the center would be in the minus k cap direction. So magnetic field due to loop, we say that magnetic field due to loop would be in the minus k cap direction. Okay. So what would be the value of the net magnetic field? So B net would be equals to B1 plus B2 minus BL due to loop, because the direction is opposite. Now this value can be equal to 0. This value, because two things are adding and one is subtracting. So when it would be equals to 0, when B1 plus B2 becomes equals to BL. That means our second statement is also correct. So second statement is correct. First statement is correct. Second is correct. Now if I1 is less than I2 and I2 is greater than I1, so what is just happening? So we are just reversing the direction of the current. So the direction of the magnetic field would be reversing. So if we say that our I1 is less than 0 and I2 is greater than 0, we are reversing the direction of the current. So the direction of the magnetic field would be reversed. Now B1 would be in the minus k cap and B2 would also be in the minus k cap direction. Okay. Now B loop, we know, because we are not disturbing the current in the loop, so it would be in the minus k cap direction. So magnetic field in the loop would be in the minus k cap direction. Now if we calculate the value of B net, what would be the value? Because these values are all in the same direction. So what we need to do? We need to add these values. And the net would be in which direction? Net would be in the minus k cap direction. Now since everything is adding, so that means this cannot be equal to 0. That means we can say that our B net cannot be equal to 0 because each of the values are adding, because they are in the same direction. So this cannot be equal to 0. So this option is incorrect. Now if I1 is equals to I2, if we say that I1 is equals to I2, okay, current is are same. That means the first situation which is now persisting. Now the Z component of the magnetic field at the center of the loop is given as to be mu naught I divided by 2R. Now at the center, what should we do? We should just join these line. Okay, we should join this line. For first of all, we just find the magnetic field at this center due to these wires. So we just join these point. Okay, and we join these lines like this. Okay, now the magnetic field
due to this wire, because the current is going in this direction, so the direction of magnetic field is perpendicular to this line, because it is perpendicular to the line joining the wire, so it would be in this direction. Okay, like this is perpendicular to the wire. Okay, and the magnetic field due to this wire would be perpendicular to the wire in this direction. We just redraw this part, perpendicular to the wire, and it would be in this direction. Okay, so we just say that this is our B2 and this is our B1. Now the values of I1 and I2 are same. Okay, the values of I1 and I2 are same. That means our mod B1 would be equals to mod B1, because the distance would be same, because the distance from here to here is the same as distance from here to here. So B1 and B2 magnitudes wise, they would be same. Now it is just the direction, so we just find what would be the direction there. Now this angle, let us suppose this angle is theta. So this angle is 90 degree. So what would be this angle? It would be 90 minus theta. It would be 90 minus theta. Now total from here to here, what is this total angle? It is 90 degree. If this is 90 minus theta, then it would be from here to here, it would be theta. So if it is theta, then here it would be 90 minus of theta. Okay. Now for this case, we see, now if this is theta, because it is just symmetric, so this angle would be theta. So this is 90 degree. So this is theta. So if we take this from the horizontal, this whole angle would be theta. We just draw this whole angle. So this whole angle would be equals to theta. Now from here to here, we are just dropping a perpendicular, because magnetic field is perpendicular. So what would be this angle? If from here to here the angle is theta, so this angle would be 90 minus theta. Okay, 90 minus theta. That means what will happen? So due to this and this, magnetic field would be just in the horizontal direction. The vertical component would be cancelled. If we take the vertical component, if we just draw vertical component, so horizontal component would be B1. This cos 90 minus theta, that means sin theta. And this would be B1 sin 90 minus theta, that means cos theta. So it would be B1 cos of theta. Now due to this, it would be in this direction. It would be same. It would be B2, just B2 sin of theta, and in this direction, it would be B2 cos of theta. Now we see that B1 and B2 are equal, so this component would be cancelled. That means along the Z direction, there would be no net magnetic field due to wire. This is important. So in the D case, magnetic field B net due to wire equals to 0 along Z direction. Along Z direction, that means B net for the whole system would be due to what? It would be due to the loop itself. Due to loop. And what is the magnetic field due to loop? It is equals to mu naught I divided by 2r. At the center, it is equals to mu naught I by 2r. And what would be the direction if we see? It is in the clockwise direction, so the this would be in the minus k cap direction. So we can say that it would be in the minus k cap direction, because the current is clockwise. So if we check our option, it is given as to be minus mu naught I divided by 2r. So this is correct. Minus due to the negative direction. So this is also correct. So what are the correct option in this case? Correct option is A option, B option and the D option. So hope you have understood the solution. Thank you. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लूप है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसकी लेंथ क्या दे रखा है, L है. ठीक है, स्क्वायर टाइप का ये लूप है हमारे पास. ये V नॉट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, इनसाइड द प्लेन है. तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 0 से L लेंथ तक हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्प्रेड, मतलब इसकी जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3L तक. तो इस डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जैसे ही ये क्या कर रहा है, V नॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ये लूप एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. और फिर हम देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला ये सेकंड पोजीशन है उसकी, और ये थर्ड पोजीशन है जब वो लीव करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब उससे जस्ट बाहर निकल जाता है. तो हमें यह बताना है कि जो Vx है, Vx क्या है, वेलोसिटी उसकी क्या होगी जब वो एंटर करेगा तो उसके अंदर रहेगा, या जब बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी, उसका जो करंट होगा Ix. एक्स के टर्म में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लेंथ के टर्म में हम देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है उसकी रेंज हम लेंथ के टर्म में देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे. और फोर्स बताना है कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो सब बता के वो सब से क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है Vx और x में जो रिलेशन है, मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल होगा इस लूप में वो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जैसे ये इंटर कर रहा है, ठीक है, ये लूप जब एंटर करना स्टार्ट करता है इस पॉइंट तक, तो इसमें कोई भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में नहीं आया है, तो 0 पॉइंट तक तो इसके पास कोई भी इसमें करंट फ्लो नहीं होगी. लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना स्टार्ट कर देगा, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जब इसका इतना पार्ट, लेट से इतना पार्ट इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा,
जितना कम पार्ट इसका इंटर करेगा तो इसमें मैक्सिमम करंट डेवलप हो जाएगी। मतलब कोई भी करंट नहीं थी, तो अचानक जब फ्लक्स चेंज होगा इसके एरिया के थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स जब कट होगी इससे जो पास हो रही है, फ्लक्स जब चेंज हो रही है तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी। और वो किस डायरेक्शन में होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इसमें बोला है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। मतलब इसमें पॉजिटिव करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये इंटर करती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब जो फ्लक्स हो रहा है, हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें अगर, तो जो आई होगी, लेट से आई जो हो, इसमें जब एंटर करेगा तो इसकी करंट जो होगी आई होगी, ठीक है। आई जो है काउंटर क्लॉकवाइज जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम देख लेते हैं। जीरो पर जब वो एंटर कर रही है, ठीक है, तो जीरो से एल के बीच में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जीरो टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू एल के बीच में जब वो एंटर कर रहा है, क्योंकि उसकी पूरी लेंथ l है। जब जीरो से एल तक आ जाएगी वो, जब पहुंच जाएगा तो मतलब पूरे की पूरी इंसर्ट हो चुकी होगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक में देखते हैं तो उसकी जो करंट होगी I इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा VBL, V वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, L जो है उसकी लेंथ है, और डिवाइड हो जाएगा किससे, R से। इसके पास रेडियस क्या है, R है। क्योंकि क्या होता है, ये जो है VBL क्या है, ये जो है इंड्यूस्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा आर, तो हमारे पास करंट आ गई। तो लेट से ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, करंट हमें मिल गई है, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी, अब आगे देखते हैं जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा इस करंट की वजह से, फोर्स क्या होगा। जो फोर्स होगा उसको हम लिख सकते हैं, जो फोर्स एफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी, आई बी एल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ से v इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि एल भी यहाँ भी है, एल भी यहाँ भी है, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा आर, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये एक्सपीरियंस करेगा किस डायरेक्शन में करेगा, लेंज के लिए, अगर यहाँ पर या लेंज का लॉ अगर अप्लाई करें, या कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, आउटवर्ड, ठीक है, लेफ्ट की तरफ होगा, तो ये होगा लेफ्ट वर्ड, ये फोर्स जो होगा लेफ्ट वर्ड इसको बोल सकते हैं हम, लेफ्ट वर्ड फोर्स जो है ये एक्सपीरियंस करेगा जब ये इंटर कर रहा है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी पूरी तरह से इंटर नहीं किया है। अब क्या है कि जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं जब ये पूरी तरह से इंटर कर गया, तब की बात करते हैं हम, सॉरी, जब ये क्या हो रहा है, अब ये इसको पूरी तरफ से इंटर कर जाएगा तो जो फ्लक्स चेंज हो रही है पूरे पूरे एरिया से वो बराबर होगी, क्योंकि जो इस एरिया से फ्लक्स होगी, जो इस एरिया से फ्लक्स होगी, जो यहाँ से होगी, जो यहाँ से होगी, हर पॉइंट पर फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो और वेलोसिटी भी क्या है हमारी, यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पर कोई भी चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। मतलब वहाँ पर करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, दोनों भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट करंट हो या जीरो करंट बोल सकते हैं, जीरो करंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब वो लीव करना स्टार्ट करेगा, जब 3L 2L L और 3L के बीच में होगा तो जीरो करंट होगी, मतलब कांस्टेंट करंट है। जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा एरिया बाहर निकलना स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, मतलब एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से, मतलब जो करंट है वो फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो हम यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो गया वो क्या हो जाएगा, -m इंटू वी, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, जो एरिया जो इसको वेलोसिटी चेंज हो रही है वहाँ पर, इसके वजह से वेलोसिटी में भी इफेक्ट आएगा, तो ये dv बाई डी एक्स, एक्स के टर्म में हम देख रहे हैं क्योंकि एरिया के साथ ही, सॉरी, लेंथ के साथ ही उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो dv बाई डी एक्स जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारा, किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहा था ये भी फोर्स है हमारा, तो ये हो जाएगा v इंटू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा आर के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, इसको dv को यहाँ रखते हैं, इस पूरे पार्ट को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dv इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम, ये नीचे आ जाएगा तो एम आर हो जाएगा, ठीक है, एम इंटू आर और इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देते हैं इस चीज़ को। इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, ये हम इंटीग्रेट करेंगे इसको v नॉट से v तक, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि पहली इसकी वेलोसिटी क्या थी, पहली वेलोसिटी क्या थी इसकी, v नॉट थी। तो v नॉट से हम क्या कहाँ तक कर देंगे, v नॉट तक। लेट से फाइनल वेलोसिटी इसकी v होगी जब वो आउट मतलब जो है लीव करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, जब छोड़ के आगे बढ़ेगी, ठीक है, लूप। तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और ये होगा कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा जो लेंथ है यहाँ पर हमारे पास, जो लेंथ का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक उसकी पूरी लेंथ क्या थी, जीरो से एक्स तक। एक्स क्या है, 0 से x तक या 0 से l तक, क्योंकि एक डिस्टेंस लें तो एक ही डिस्टेंस, एक ही बात है, जहाँ x लिख लें l लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये इसको इक्वल करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि x लिया है तो हमने x की यूनिट में हमने लेंथ लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, dv को करेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट माइनस, ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट, नॉट v नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट, ठीक है, v माइनस वी नॉट, और ये इक्वल हो जाएगा x के फंक्शन में, ठीक है ये, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ से आएगा तो x हो जाएगा 0 टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। सो ये हमारे पास हमें मिल गया है। अब इसको क्या करेंगे, v नॉट को उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं v x इक्वल टू हो जाएगा, x के फंक्शन में है तो यह हो जाएगा हमारा v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा एम आर इंटू एक्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की। अगर हम इसको यहाँ पर हम सपोज कर लें, यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं, लेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमने इसको कांस्टेंट मान लिया है तो इसको हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास वी नॉट माइनस के एक्स, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है हमारे पास। इसी तरह जो हमारी एक आई होगी, करंट जो होगी, आई एक्स जो आएगी, करंट आएगी, और करंट के फार्मूला हमारे पास फर्स्ट क्या था, करंट था वी बी एल बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें v है हमारे पास, बी एल बाई आर से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा v नॉट बी एल बाई आर, ये हो जाएगा r, और माइनस हो जाएगा के बी एल बाई आर एक्स, ठीक है, के बी एल बाई आर एक्स। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और इसी तरह जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स क्या होता है, एफ होता है हमारा, एफ था अभी हमने कैलकुलेट जो किया था, एफ इक्वल्स क्या आया था, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, मतलब बी एल से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, माइनस हो जाएगा के बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें के की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इससे जो है फार्मूले का दूसरा जो है दूसरे तरह से हमारे फार्मूला मिल जाएगा बी स्क्वायर के टर्म में और एल स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है ये भी क्या होगा, लेफ्ट वर्ड ही होगा, ठीक है, लेफ्ट वर्ड फोर्स होगा हमारा। इसकी डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो भी लेफ्ट वर्ड होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन हम देखें, ठीक है, ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसके हिसाब से जो हमारे पास करंट आई है, ठीक है, करंट और फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके हिसाब से देखें तो हमारा जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में देखें तो हम बोल सकते हैं कि जब वो एंटर कर रहा था तो क्या थी, सबसे ज़्यादा हमारे पास करंट थी, ठीक है, पोटेंशियल उसके सब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सबसे ज़्यादा था, मतलब इस पोटेंशियल पर इस तरफ का एंड जो है वहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल था, इस तरफ कम था, तो मैक्सिमम था जब वी नॉट पे वो एंटर करना स्टार्ट किया आई जीरो पर, ठीक है, मैक्सिमम था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो एंटर करती चली गई, जब वो जीरो से एल लेंथ पे आ गई तो कांस्टेंट हो गया, एल लेंथ के बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, या इसको हम जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर करंट चेंज नहीं हो रही तो उसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई करंट नहीं मिल रही है यहाँ पर, ठीक है।
L से 3L तक कोई करंट नहीं मिल रही है। 3L के बाद जैसे जैसे वो एरिया कम होता चला जाएगा तो हमारी जो पोटेंशियल है वो भी क्या होती कम होती चली जाएगी। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है। दूसरा यहाँ पर देखें, वी एक्स के साथ हमने लिया है, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर फिर है वी एक्स के साथ, ये वी एक्स हमारा ठीक है वी नॉट माइनस के बाई एक्स। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है बी स्क्वायर एल पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली और आर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आर तो चेंज नहीं हो रहा है, एल चेंज हो रहा है, तो एल जैसे जैसे चेंज होगा उसके साथ हमारी जो है वी भी चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है हमारी। तो यहाँ पर देखें अगर, ठीक है, सो जो बी ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो सेम है। इसके बाद जो है करंट जीरो है, करंट एल से 3L तक जीरो है। ठीक है, लेट से इस यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर हम ये माने यहाँ पर 3L तक तो जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो कम हुआ। इसके बाद यहाँ तक हम मान सकते हैं कि लेट से मैक्सिमम करंट थी अंदर। उसके बाद जैसे जैसे वो जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने स्टार्ट होगा, क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यहाँ भी हो रहा है, बस ये हो रहा है कि करंट की वैल्यू जो है निगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो कम हो रही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर ए और बी जो हैं दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा। और सी और डी ऑप्शन में जो है दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कम होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। और डी ऑप्शन को देखें, डी बोल रहा है पहले जीरो निगेटिव होगी, निगेटिव से पहले वहाँ तक आएगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर ऊपर हो जाएगी। तो ये भी इसमें कोई रिलेशन इस तरह नहीं मिल रहा है हमें। तो बी और ए ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, Hello dear students, the question is in the xy plane the region y greater than 0 has a uniform magnetic field B1 k cap and the region y less than 0 has another uniform magnetic field which is B2 k cap. A positively charged particle is projected from origin along the positive y axis with speed v naught equals to pi meter per second at t equals to 0. As shown in the figure, neglect gravity in this problem. Let small t equals to capital T be the time when the particle crosses x-axis from below the first time. If B2 equals to 4 times of B1, this is the condition given to us. The average speed of particle in meter per second along the x-axis in time interval t is. We have to find average speed of the particle along x-axis in time interval t. This is the question figure in which a charged particle, which is positively charged particle, is projected from origin. This is origin, let's say it is O point, and it is projected with pi meter per second. When it enters into the field B1, which is in y direction, and B2 is also in y direction, but B2 and B1 are both are different. When this charged particle enters into the magnetic field, H, velocity of charged particle and magnetic field both are at 90-degree angle, so this will revolve in a circular path. So it will complete semicircle in magnetic field B1, and let's say the radius for that semicircle is R1 in magnetic field B1. Then the charged particles enters into magnetic field B2, and here also it revolves in circular path. Let's say radius for this circle is R2. This point is P, and let's say this is point Q. So the distance which is covered by the particle along x-axis will be equals to 2r1 plus 2r2. Here the angle between magnetic field vector and velocity of charged particle v is 90 degree. So the particle will revolve in a circular path, and we know that average speed is given by average speed equals to total distance covered by total time taken. First of all, we will calculate R1 and R2. We know that in magnetic field, R1 is given by mv upon qb1, and R2 will be given by
R2 equals to mv upon qb2, and it is given that b2 equals to 4 times of b1. So by putting b1 equals to b2 by 4, r1 will be equals to r1 equals to 4 times of mv upon qb2. So from here, relation between r1 and r2 will be equals to r1 equals to 4 times of r2. Let's say this is relation number 1. Now we will find the time spent by particle in both of the magnetic field. So the time spent by particle in magnetic field B1, it will be equals to T1 equals to pi R1 upon V. Pi R1 is the distance which is covered by particle in magnetic field B1, and V the velocity of particle, and it is given that velocity of particle is equals to pi meter per second. So from here T1 will be equals to R1. Similarly, the time spent by particle in magnetic field B2, time in magnetic field B2, let's say it is T2, then it will be equals to pi R2 upon V, the velocity of particle. So from here, T2 will be equals to R2. So total time, it will be equals to T equals to T1 plus T2, and by putting value of T1 and T2, it will be equals to R1 plus R2. And from relation 1, by putting value of R1 equals to 4 times of R2, the time spent will be equals to 5 times of R2. This is relation second. Now we will find distance traveled by particle along x-axis. So distance traveled by particle along x-axis. The distance d equals to 2 times of r1 plus 2 times of r2. By putting value of r1 from equation 1, which is equals to 4 times of r2, it will be equals to 2 into 4 times of r2 plus 2r2. So the distance d will be equals to 10 times of r2. Let's say this relation is relation 3. Now average speed, which is given by total distance by total time, it will be equals to average speed equals to total distance by total time. From relation second and third, total distance equals to 10r2 and total time equals to 5r2. So from here, average speed, it will be equals to 2 meter per second. So answer for our question is average speed of the charged particle will be equals to 2 meter per second. This is the answer for question. Thank you. Hello everyone, let us start with our question. In this question, it is given that there is a thin rectangular metallic strip which is having a constant current I, which is flowing through the positive x direction as shown in the figure. That means in this direction there is a current which is flowing. Now the length, width and the thickness of the strip are given as to be L, W and D respectively. There is a uniform magnetic field B which is applied on the strip along the positive y direction. So this is our y direction, okay? The up direction is the y direction. Now due to this, there is a charge accumulation which experience a net deflection along the z direction. And where is the accumulation of charge? It is on the surface PQRS, and equal and opposite charge on the face opposite to PQRS. That means on this face and this face there is charge accumulation. There is also a potential difference which is developed along the wire. Why it is developed? Due to the accumulation of the charges. Now the charge accumulation continues until the magnetic force is balanced by the electric force. Now if we want to balance this charge accumulation, magnetic force should be balanced by the electric force, or these values should be equal. Now the current is assumed to be uniformly distributed on the cross section of the strip and carried by the electron. Now we need to consider two metallic strips 1 and 2 of same dimension N1 and N2, okay, respectively. Now the strip 1 is placed in magnetic field B1 and strip 2 is placed in magnetic field B2, both along the y direction. Then V1 and V2 are the potential difference which are developed across between M and N in the strip 1 and 2. So this is our M
this is, sorry, K and M. So this is our K, this is our M, along which the potential differences are this basically appearing. Now, assuming that the current is same for both the strip, we need to match what is the correct option. And the option are regarding the magnetic field value, the N value, and the we can say that voltage value. Okay. Now, if we just see the statement here, it is saying that this accumulation will stop when magnetic force is balanced by the electric force. How can we write the value of the magnetic force? It is equals to Q into velocity, which would be the drift velocity, QVB. What is the electric force? It is charge times the electric field. How can we write this VD? Because Q and Q would be cancelled. So we need to place the value of VD. VD is equals to I divided by NEA, where I is the current, N is basically the number of electron per unit volume, E is the charge on the electron, A is the area. Now area of this, we say that this cross section, which would be equals to W multiplied by D. This would be equals to, so Q is already cancelled. This would be equals to electric field. Now in this region, due to the electric field, so there would be a potential which would be developed. Now we know that electric field could be written as V divided by the distance between the two. So from here to here, the distance is W. We put the value as like this. So this would be the case. So we can say that I would be equals to, V would be equals to, here it would be B also. So potential difference would be equals to I into B into W divided by N into E into A. What would be the area? So area would be W multiplied by D. So it would be W multiplied by D. Now this and this would be gone. So we can say that V would be, or we can just rewrite this statement as VD divided by B. This would be equals to I divided by NE. Okay, we can write it like this, or what we can do, because this magnetic field and we need to have a relationship between B, N and V. So we can just rewrite this expression as, V into N divided by B. This would be equals to I divided by ED. Okay, so these values are constant, so we can say that we just write here as V1 N1 divided by B1. This would be equals to V2 N2 divided by B2. We can just write it like this. Now in the A and B option, B1 and B2 are same. Now if we just calculate the A and the B option, we put the value of B1 and B2 equals to B. Then we can say that V1 into, what is the value of N1? It is twice of N2. So 2N2 divided by B1 and B2, we are just putting the value as to be B. V2 into N2 divided by B. So from this, we can say that V2 should be equals to twice of V1. So that means A would be the correct and B would be wrong. Now in C and D, in option C and D, we have been given with our N1 is equals to N2 and B1 is equals to twice of B2. Now we put all the result into this expression. So V1 into N1 and N2 we are taking to be N divided by B1 is twice of B2. This would be equals to V2 into N value is N2 value would be N divided by B2. Now if we calculate this, we got the value of V2 would be equals to 0.5 of V1. Now if we check the option, V2 equals to 0.5 of V1. So we can say that C would be the correct option and D would be the wrong. So the correct option are A and C. Hope you understood the solution. Thank you. ये एक पैसेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ सर्टेन मटेरियल्स नोन एज सुपरकंडक्टर्स. हमें कुछ मटेरियल्स होते हैं ऐसे जिनके इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है. चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम ए नॉन जीरो वैल्यू टू जीरो as the temperature is lowered below a critical temperature Tc0. जैसे ही हम इन मटेरियल्स का टेम्परेचर जो है किसी क्रिटिकल टेम्परेचर Tc0 से कम करते हैं तो इनका रेसिस्टेंस का वैल्यू किसी नॉन जीरो वैल्यू से जीरो तक काफ़ी एब्रप्टली चेंज होता है. एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुपरकंडक्टर्स इज़ दैट, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इन सुपरकंडक्टर्स का ये है कि दियर क्रिटिकल टेम्परेचर बिकम स्मॉलर दैन Tc0. उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है नॉर्मली तो Tc0 होता है, तो ये Tc0 से भी कम हो जाता है इफ़ दे आर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. अगर इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख देते हैं. दैट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर Tcb इज ए फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B. जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है B मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के फंक्शन में होता है. ठीक है.
द डिपेंडेंसी ऑफ TC ऑन B इज शोन इन द फिगर। और ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है हमें वो इस फिगर में दिखाया गया है। तो आप गौर से देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 थी तब क्या थी, ये वैल्यू जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो TC 0 के इक्वल है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कम होते जा रही है। तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सुपर कंडक्टर हैज TC0 इज इक्वल टू 100 केल्विन। एक सुपर कंडक्टर है और उसका TC0 की वैल्यू 100 केल्विन है, यानी कि अगर B इज इक्वल टू 0 है तब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो TC0 होगा और वो वैल्यू जो है वो 100 केल्विन दिया हुआ है। When a magnetic field of 7.5 टेस्ला is applied, जब B की वैल्यू जो है वो 7.5 टेस्ला है तब जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इट्स TC डिक्रीजेस टू 75 केल्विन। जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 75 केल्विन पे आ जाता है। फॉर दिस मटेरियल वन कैन डेफिनेटली से दैट। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इसी मटेरियल के लिए कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली सही है। तो इसमें आप कंसीडर करो ये एक पॉइंट B1 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उनमें से कौन सा क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, जाहिर सी बात है ये वाला। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होते जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें पता चला यहाँ से इस ग्राफ को देख के। अब हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये है, अब मैग्नेटिक फील्ड 7.5 है तो ये है। तो हम लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं, तो ऑप्शन देख के पता चलना है कि हमें B इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 10 पे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले B इज इक्वल टू 5 पे एनालाइज करते हैं। B इज इक्वल टू 0 पे हमें ये वैल्यू जो है वो 100 केल्विन दिया हुआ है और B इज इक्वल टू 7.5, मैं B2 की वैल्यू 7.5 मान रहा हूँ। तो ये टेम्परेचर जो है वो 75 केल्विन है और ये टेम्परेचर 100 केल्विन है। तो जाहिर सी बात है B1 के लिए, B1 की वैल्यू अगर 5 टेस्ला मैं रखूँ तो क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो 100 केल्विन और 75 केल्विन के बीच में है, ये तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये B ऑप्शन आप चेक करो, ये वही कह रहा है, तो B ऑप्शन तो डेफिनेटली सही है। पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, पहला ऑप्शन इसलिए डेफिनेटली सही नहीं है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि TC जो है 5 टेस्ला पे B की वैल्यू अगर 5 टेस्ला होगी तो 75 से 100 के बीच में होगी, लेकिन एग्जैक्टली 80 के इक्वल होगी ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग B इज इक्वल टू 10 टेस्ला पे देखते हैं। B इज इक्वल टू 10 टेस्ला कहीं इधर आएगा और भी 7.5 के राइट हैंड साइड में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन 75 केल्विन होगा। डेफिनेटली ये बात कहा जा सकता है। तो ये C ऑप्शन तो गलत हो गया और D ऑप्शन सही हो सकता है, मे भी सही हो सकता है, डेफिनेटली नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू 75 से कम है। लेकिन एग्जैक्टली हमारा B इज इक्वल टू 10 टेस्ला पे क्रिटिकल टेम्परेचर 70 केल्विन होगा, ये एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते, इसलिए हमारा केवल B ऑप्शन सही है। Hello guys, so today we have this question that two wire each carrying a steady current I are shown in a 4 configurations in column 1. Some of the resulting effects are described in a column 2. Match the statements in column 1 with the statement in a column 2. So guys, as we can see here, the list 1, this is the column 1 and this is list 2, it's column 2. And this side in a column 1, as we can see, there we have given a 4 configurations and there this side we have given their results and we have to match which is the right one, and this side we have also given the diagram of that. So guys, so first one is point P is situated midway between the wires. So as we can also see from the diagram that they are the two wires, this and this,
and this is the point P, which is situated in a midway between the wires. So guys, as we can see from the list too, that there are a magnetic field and magnet means what we have to do, we have to find their magnetic field and we have to then match which is a correct one. So as we can see here, so there are two wires and point P is placed between them. So we can find the direction of the magnetic field at P due to the wire by the cross rule, and the direction of the force on a wire due to the other is calculated by the direction of the cross product of direction of current and direction of magnetic field. So I can write here that in A part, then this F will be then equal to current, charge, current into magnetic field, and these are the vector quantity. So now uh, we can say that by thumb rule the magnetic field lines at P due to both wires are in opposite direction, and since it's a midpoint, so they are equal and opposite. So I can write it here also that by by thumb rule thumb rule the magnetic field lines at P the magnetic field lines at P at P due to wire okay, whose wire? Both wire. So they both are in opposite direction, are opposite direction, opposite direction. Okay, and since it's midpoint, so as we know that the P point is placed between the wires, so since it's midpoint, it's midpoint, midpoint. So guys, they are equal and opposite by symmetry, hence the resultant field is 0. So I can write here they they are equal and opposite in symmetry, right? By symmetry, so what will happen guys, they will cancel each other effect and hence the resultant will be 0, hence resultant is 0. So if we move towards the options guys, so which option is right? So as we can see that here the first one is the magnetic field due to current in a wires are in the same direction. No, they are in a opposite direction. It means this option is right, and there is no magnetic field at P. This is also true for 1. Why? Because we can say they are equal and opposite, and then there is a no magnetic effect. Hence the resultant field is 0. So we have the correct option, that is Q and R. So I can write here for this the option Q and R is true. Q and R. Now move towards the second one. What was the second one? So guys, we can see that here point P is situated at the midpoint of the line joining of the centers of the circular wires which have the same radii. As we can see, there are two circles and here we have a point P. Now for this we have also check it out which one is true. So guys, uh, by thumb rule, the magnetic field lines at P due to the both wires are in the same direction.
So we can say the wire neither attract or nor repel. So I can also write here, this is a B part. So by thumb rule, by thumb rule, thumb rule. So guys, apply on infinite simul paths of the sense of the direction of the magnetic field. Okay, as I can also write it here that apply on infinite simul paths for the sense of direction, for the sense of direction of magnetic field, direction of magnetic field, magnetic field. So we can say by thumb rule, the magnetic field lines at P, magnetic field lines at P due to both wires, due to both circular wires, due to both wires are in same direction, are in same direction, same directions. So guys, if they are in the same directions, what will happen? They will neither repel each other nor attract, right? So I can write here, they will neither, the wires are attract, not repel, not repel. So guys, as we move towards the options, so as we can see from the options that which option is right. So here we have this question that point P is situated on a midpoint of the line joining of the center of the circular wires. So as we can see from the answer that they will neither attract nor repel. It means they are in the same direction. It means the option this will be true for B. So here in options I will write the option, here I will write option P is true. Now guys, if we move towards the third one, so we have here the third part, that is point P is situated at the midpoint of the line joining of the center of the circular wires which have same radii. And this side we have given this diagram that we have these two circular wires and here we have the point P between them. So by thumb rule, the magnetic field lines at P due to both wires are in opposite direction, and since it's midpoint here, as we can see the P is midpoint, they are equal and opposite by symmetry, hence the resultant field is 0. So the direction of the force each wire towards each other, as it can be seen from here guys, then they will, so now you can write here in the C part, as you can say guys, by applying thumb rule magnetic field P due to, so guys as we done it earlier as in a part, this is same as here, this is same as here. So we will write here that they are equal and opposite by symmetry, they are equal and opposite by symmetry, and opposite by symmetry, by symmetry, right? So it means its resultant will 0, hence resultant will 0.
Resultant is 0. So as we move towards the option, so for this will be same. The option Q and R will true for it, as they are equal and opposite each other, so there is no magnetic field. So can write option Q and R is true for it. Q and R. Now move towards the last one. So here the fourth configuration is given, that is point P is situated at the common center of the wires. So as we can see that this is a wire 1, this is a wire 2, and between them it is the point P which is situated between the center of the both wires. Now for this we have also the thumb rule. So by if you apply here the thumb rule, so I can write here that by applying thumb rule, so guys in the D part here we will write by thumb rule magnetic field line at P due to both wire are in opposite direction, and since the radius is different, so here firstly I will write by thumb rule by thumb rule magnetic field lines at P, magnetic magnetic field lines at P due to both wires are in opposite direction, are in opposite direction opposite directions, and since the radius is different, and since the radius is different, the radius is different is different, so the resultant field is non-zero, and so resultant field is non-zero, is non-zero, and in opposite direction, opposite directions. So guys, as we move towards the options, so we can see that which option is right. So here this option is not true for this because this is in a opposite direction and this is no magnetic field. So guys, it means the magnetic field at P to the current in a wire in a same direction. Why? As we can see from the answer that here the thumb rule magnetic field line at P due to both wires are in opposite direction, and since the radius is different, this is opposite direction but the radius is different, so the resultant field is non-zero and not so guys here this is not 10, this is not. So as we can see for this the option P is true, so option P. So I hope guys now you understand these all questions, so thank you guys. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि 4x4 का कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं चार्ज से रिलेटेड, और यहाँ पर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या होगा अगर इसके साथ वायर के साथ किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट को सेकंड कॉलम से मैच करता है, तो ये मोर देन वन जो है मैच हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट को हम पढ़ते हैं, बोला है अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ एंड ऑफ द वायर। एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, ठीक है। चार्ज है मतलब इस पे क्या है, क्यू है, ठीक है, मतलब चार्जेस इसमें है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक वायर से। वायर से कनेक्ट करते, लेट से एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर है,
ठीक है, लेट से ये वायर है, इस तरह से ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से ऐसे जो है कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, कनेक्ट कर देंगे तो हमने क्या किया, एक्चुअली इसको हम शॉर्ट कर दिया, मतलब कनेक्ट हमने अगर देखो तो ये क्या कर दिया, कैपेसिटर था, कैपेसिटर पे एक प्लेट पर मानते हैं, इस प्लेट पर ए प्लेट जो है और इसकी बी प्लेट है, एक प्लेट पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और बी प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, इस तरह से कंसंट्रेटेड चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी की वजह से अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं सर्किट को, ठीक है। कैपेसिटर, ये वायर क्या होगा, हीट हो जाएगा, हीट ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ए जो होगा कनेक्टेड होएगा किससे, क्यू से मैच कर रहा है। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द वायर, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। कांस्टेंट करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्किट में ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर कोई इक्विपमेंट लगा है जहाँ पर करंट जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी, तो पी बिल्कुल नहीं हो सकता। आर को देखें तो आर बोल रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगी क्योंकि कैपेसिटर की दोनों एंड है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड है नहीं कोई चीज, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट नहीं होगा। इसमें देखें तो बोल रहा है चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर, एंड ऑफ द वायर बोल रहा है कि जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के जो चार्जेस हैं वो अपीयर होंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसा कुछ हो सकता है, चार्ज डेंसिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी जो है जनरेट हो रही है वायर में। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में बोल रहा है बी में, इसमें बोल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं हम, ए जो है किससे कनेक्टेड हो रहा है, ए मैच हो रहा है क्यू के साथ, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी में बोल रहा है द वायर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ with a constant velocity in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the motion. Let's say कि कोई मीडियम है, यहाँ पर कोई एक मीडियम है, ठीक है। वहां पर क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर लेंथ के अबाउट जो है मूव कर रहा है चार्ज, ये एक रीजन है कोई, हम मान लेते हैं इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। टाइम के साथ यहाँ पर वेरी नहीं कर रही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है। तो लेट्स से कि ये रॉड है या वायर है, जो भी वायर है यहाँ पर, तो वायर इस तरह लेंथ के एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर, इसकी अगर देखें तो इसकी लेंथ की एक्सिस ये है और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से मूव कर रहा है। तो वायर को जब हम यहाँ ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो क्या होगा, इस पर लेंज के लॉ के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा तो जो इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, एक एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरे एंड पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे। तो चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, चार्ज जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस हो गया चार्ज और ये हो गया प्लस, ये प्लस और ये माइनस, डाइपोल जैसा ही बिहेव करेगा। डाइपोल के वजह से क्या होगा कि इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से आंसर सही होंगे इसके, किससे किससे मैच कर रहा है। बी में देखिए द वायर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या होगा, बोला है कांस्टेंट करंट विल फ्लो थ्रू द वायर, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, जो चार्ज है माइनस चार्ज को प्लस चार्ज की तरफ या प्लस चार्ज को माइनस चार्ज की तरफ फ्लो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन है, लेट्स से कि ये वायर है, ठीक है, वायर पे कुछ चार्जेस है, यहाँ पर प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, इस तरह से जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में गए तो इंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, प्लस एक तरफ शिफ्ट हो गए और माइनस एक तरफ। जिस जिस टाइम पर वो शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पर कुछ करंट फ्लो होगी, हम ये मान सकते हैं कि कुछ करंट फ्लो होगी, लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा सारे के सारे चार्ज एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो गए और दूसरे पे अगर नेगेटिव हो गए, तो क्योंकि अब मूवमेंट बंद हो गई है चार्ज की, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो हम ये यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर करंट जो है मूव कर रही है या फ्लो हो रही है, ठीक है। तो कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रही है। क्यों में बोल रहा है थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड इन द वायर, थर्मल एनर्जी जनरेट होने के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी तो थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। आर में बोल रहा है अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, जो कि हमने पहले ही देखा कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज दोनों एंड पर अगर कंसंट्रेट हो गए हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से वी जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, तो ये आर के साथ मैच करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन में देखें तो बोल रहा है चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर, जो कि पहले ही हम देख चुके हैं कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस जो है अपीयर हो रहे हैं, तो एस के साथ भी ये मैच कर रहा है। तो जो बी की मैचिंग है वो किसके किसके साथ है, बी जो है आर के साथ मैच कर रहा है और साथ ही साथ
एस के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब बात करें अगर सी ऑप्शन में, सी में देखें तो बोल रहा है द वायर इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज अ डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। अब इसी वायर को प्लेस किया जा रहा है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी तक कहा था मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो क्या होगा वायर के साथ, ये देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं इसी में, अभी तक ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। अब मान लेते हैं ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम चीज कर रहे हैं, द वायर इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज अ डायरेक्शन अलोंग द, यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये वेलोसिटी नहीं है इसके पास, यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसको प्लेस कर दिया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो वहां पर प्लेस कर दिया गया। तो क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, वो क्या होगा, चार्ज को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज, अगेन सेम सिमिलर कंडीशन होगी। तो चार्जेस कंसंट्रेशन हो जाएगा दोनों एंड पर। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ, तो मैच दिख रही है हमें। अब अगर देखें तो जैसे ही चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है आर के साथ भी। और किसके साथ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसलिए थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, और कांस्टेंट करंट तो बिल्कुल फ्लो नहीं होगी, ठीक है। करंट फ्लो होने के लिए ये जरूरी है चार्ज का मूवमेंट होना, ठीक है, कि चार्ज जो है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करें। तो क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि मूव नहीं कर रहा है, अगर रॉड को मूव करा रहे हैं, इधर से उधर करते हैं, रोटेट कराते हैं, तब करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं वायर में, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी। डी ऑप्शन में देखें, सॉरी डी में देखें, या इसको पहले देख लेते हैं। सी जो है किसके साथ मैच कर रही है, सी मैच कर रही है आर और एस के साथ, ठीक है। सी की मैचिंग आर और एस के साथ हो रही है। लास्ट हमारा बचा है क्या, डी। डी बोला ए बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द वायर। एक बैटरी है, लेट्स से ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, इसको कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, ठीक है। लेट्स से वी वोल्ट की बैटरी है, कांस्टेंट ईएमएफ है, वी वोल्ट की बैटरी, इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो कनेक्शन के बाद क्या होगा, इसमें थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द वायर, बिल्कुल थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। जैसा कि अभी हम देखे थे, जब कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया था, क्या हो रहा था वहां पर क्या था, कैपेसिटर के केस में कि दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज थे, बस उसका साइन अपोजिट था, एक तरफ प्लस था, एक तरफ माइनस था। यहाँ पर बैटरी है, ठीक है। सो बैटरी जब कनेक्ट कर रहे हैं, इक्वल ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। वहां पर चार्ज थे जो कि रेस्ट चार्ज थे, ठीक है, कांस्टेंट चार्ज थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इस वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। सर्किट कंप्लीट होगी तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से करंट निकल के और निगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगी, तो कांस्टेंट करंट भी फ्लो हो रही है। तो ये मैच कर रहा है। अगर देखें तो जो डी है, डी की मैचिंग हो रही है पी के साथ, डी की मैचिंग हो रही है क्यू के साथ, और डी की मैचिंग होगी आर के साथ भी। आर क्या बोल रहा है, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट डेवलप हुआ है, इस वजह से करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। तो यहाँ पर जो डी है वो मैच कर रहा है पी, क्यू और आर के साथ। एस के साथ देखिए तो बोला है चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चार्ज कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो कहीं भी रेस्ट पे नहीं है कि एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक एंड पे जाके पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पी, क्यू और आर के साथ ही मैचिंग होगी। तो यहाँ पर देखें तो जो डी की मैचिंग है किसके साथ है, पी, क्यू और आर के साथ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। हमें मैच करना था, तो यहाँ पर मल्टीपल मैचेस थे जो इस तरह थे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में कुछ प्रोसेस दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में कुछ फिजिकल फिनोमिना दिए गए हैं। दोनों को हमको मैच करना है, कौन सा प्रोसेस किस फिजिकल फिनोमिना को बिलोंग करता है, ठीक है। तो 4x4 का यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर 4 जो है प्रोसेस है और यहाँ पर 4 फिजिकल फिनोमिना है। तो यहाँ पर मल्टीपल मैच भी पॉसिबल है कि मल्टीपल मैच भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट में बोल रहा है ट्रांजिशन बिटवीन 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर लेट्स से कि ये एनर्जी लेवल
कोई एक n है और ये n डैश है, इसके बीच में इन दोनों लेवल के बीच में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ट्रांजिशन होगा तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। कॉलम सेकंड में अगर देखें तो बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की अगर बात करें तो क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ही, ट्रांजिशन की वजह से ही जो है प्रोड्यूस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्योंकि एक्सरे दो तरह की होती है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे होती है जो कि न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है तो पॉसिबल है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है एमिट हो। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहा है, जनरल लेवल, जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर पी के साथ ये जो है मैचिंग हो सकता है। बी में बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम ही अलग चीज़ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन की वजह से मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो होती है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो ये जो फिनोमिना होते हैं इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका फोटो इलेक्ट्रिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आर में देखें तो बोल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, कोई भी स्पेक्ट्रम की बात करें तो कब बनता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, ठीक है। या अगर देखें तो ग्राउंड स्टेट से अगर वो ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि अगर बात करें स्पेक्ट्रम की तो स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो स्पेक्ट्रम एमिशन का स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्सॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोनों तरह से हमें पॉसिबल मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका मैच जो है आर के साथ भी पॉसिबल है। बी में अगर देखें तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मटीरियल। तो जैसे हमने पहले बात की तो इलेक्ट्रॉन जो एमिशन होता है किसमें होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बी जो है किसके साथ होगा, क्यू के साथ मैच होगा। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में देखें तो दिख रहा है बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके एक्चुअली दो तरह के होते हैं। बीटा डीके की बात करें तो बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से एमिट होते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बीटा डीके या बीटा माइनस डीके, या इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली बीटा माइनस पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं। और बीटा प्लस जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं जो कि एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो बीटा प्लस डीके हो रहा है और बीटा माइनस डीके हो रहा है यहाँ पर। तो बीटा डीके बोल रहा है तो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन एमिशन भी आएगा, तो इसलिए ये एस के साथ भी मैच करेगा, ठीक है। सी में बोल रहा है, सी अगर ऑप्शन की बात करें, सी में बोल रहा है मोसले लॉ। मोसले लॉ जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मोसले ने जो लॉ दिया था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए दिया था, जो कि कोलिजन से था, ठीक है। तो वहाँ पर रिकॉयल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए वहाँ पर एनर्जीज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये लॉ मोसले ने दिया था। तो ये किससे बिलोंग करता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के, ठीक है। डी में बोले तो चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। तो फोटोन एनर्जी कब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, हमने इससे पहले बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, रेडिएशन आती है। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन होते हैं फोटॉन्स, ठीक है, जिसको हम गामा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, गामा फोटॉन्स बोलते हैं, लाइट फोटॉन्स होते हैं। तो रेडिएशन किसी भी तरह की है, वो किससे बनी है, फोटॉन से मिलकर बनी है। तो वो रेडिएशन जब आती है सरफेस, मेटालिक सरफेस को हिट करती है, तो यहाँ से वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने की वजह से वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन किससे बिलोंग कर रहा है, डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब क्यू के साथ मैच करेगा, ठीक है। चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा है, और किसी भी जो है कॉलम सेकंड में किसी के भी साथ मैच नहीं करेगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, और बीटा डीके है। तो सिर्फ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे जो बेस्ट मैचेस हैं, कौन किसके साथ कर रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जो ए है, ए का मैच हो रहा है पी के साथ और साथ ही साथ आर के साथ। बी का मैच देखें तो किसके साथ हो रहा है, बी मैच कर रहा है
Q के साथ और S के साथ, ठीक है। C जो है C का मैच हो रहा है, C को अगर देखें तो किसके साथ, P के साथ मैच कर रहा है, और जो D है, D किसके साथ मैच कर रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब Q के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये Q से मैच कर रहा है। तो ये हैं इस कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड की जो मैचिंग करनी थी, तो ये इसके बेस्ट मैचेस हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैचिंग होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई मेटालिक ब्लॉक है कैरिंग करंट आई करंट कैरी कर रहा है सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी एज सोन इन फिगर। कोई मेटेलिक ब्लॉक है जिसको क्या कर दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्स कैप डायरेक्शन में क्या हो रही है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हमें दिखा रखा है उसने फिगर में। द मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स एफ, ये जो मूविंग चार्ज है ये क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना, एफ, ओके। गिवन बाई विच इज गिवन बाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, विच रिजल्ट इन लोअरिंग द पोटेंशियल ऑफ द फेस। तो किधर की फेस की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो अगर यहाँ करंट फ्लो कर रही है तो मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो मूविंग किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, ओके। तो हमारे यहाँ पे मतलब क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ई के इक्वल है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वी एक्स या वी जो है हमारा क्या है, माइनस वी एक्स है, ओके, आई कैप डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी क्या है, वी है, उसने बोल रखा है कि वी लेना है तो हम वी ही ले लेते हैं, काहे के लिए वी एक्स लें, तो वी माइनस वी आई कैप हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई उनकी। तो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, तो फोर्स आ जाएगा माइनस ई वी आई कैप माइनस में, और ये क्या आएगा, क्रॉस बी, बी किस डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन में है, तो बी ये जे कैप हो जाएगा, ओके। ये कितना आ जाएगा, जे कैप, ये आ गया। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई वी बी आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो कितना लगेगा, ये लगेगा ई वी बी क्रॉस के कैप। अब उसने बोला है कि कौन से फेस का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो फोर्स का जो फेस है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, के डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे जो फेस होगी वो फेस होगा कौन सा, ए बी सी डी, ओके। तो आप फोर्स की वजह से देख सकते हैं कि फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इस वजह से जो फेस होगी वो क्या होगी, ए बी सी डी फेस होगी, ओके। तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू और ये फेस हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Hello everyone, let us start with our question. In this question, what has been given that a current of 10 ampere flows through a closed path in the circuit which is in the horizontal plane as shown in the figure. So this is a figure in which a current of 10 ampere is flowing. The circuit consists of 8 alternating arcs of radius 0.08 meter and R2 equals to 0.12 meter. So this is a smaller arc, this is the smaller arc, these are at a radius or at a distance of 0.08 meters, and the bigger arc they are at a radius of or at a distance of 0.12 meter, and they are subtending the same angle at the center. Okay, now what we need to find, we need to find what is the magnetic field produced by the circuit at the center. So what is the value of the magnetic field at the center, we need to find the value of magnetic field at the center, B value at center we need to find. Okay, what else we need to find, an infinitely long straight wire carrying a current of 10 ampere is passing through the center of the above circuit vertically with the direction of the current being into the plane of the circuit. So if we are placing a wire here and the current in the wire is going into the plane of the paper, so what is the force acting on the wire at the center? So what is the value of the force acting on the wire at the center due to the current in the circuit? So what will be the value of the force on the wire? Now another question is mentioned, what is the force acting on our AC and CD due to the current at the center? So there would be current at the center due to a wire. So what would be the force on this arc, on this arc, on this arc, what is the value of force? And on this arc, what is the value of force?
due to the wire at the center. Okay, we need to find this. Now, how can we do this? So magnetic field in the A part, magnetic field at the center, what would be the values? So magnetic field would be due to this inner radius, so we can call it as V1, plus due to this outer circle or outer this element, we can call it as V2, plus due to this straight part, so we can call it as V3 due to the straight part. Okay, now what are these respective values? So for example, V1, how can we calculate it? So if there is a circle, which is having a current I ampere, so the magnitude of magnetic field at the center would be given as mu naught I over 2r. 2r. R is the radius. Okay, now here this is smaller circle or a smaller part, it is consisting of 4 arc, not 8 arc, because in a complete circle there would be, if you are dividing it into 8 part, so there would be an 8 part would be making whole of the circle, but here there are just 4 part. It means that they are making a semicircle. So what would be the magnetic field at the semicircle? Due to the semicircle, it would be just half of this value. So it would be mu naught I divided by 4. It would be mu naught I divided by 4. And what is the distance? Its distance is r1. So radius is r1 plus. Similarly, for the outer one, we can similarly write, because there are just 4 arc and not the 8 arc. So magnetic field would be just half of this value of the complete circle. It would be divided by 4 r2. Now, what is the magnetic field due to this straight wire? Because a straight wire, this would be passing through this. This would be passing through the center. So there would not be any magnetic field due to this 8 parts, because their line of action is directly inserting into the center. So this would be 0. So now if we were to take this part as common, we can take it as common. Mu naught divided by 4, mu naught I by 4, we can take it as common. Then 1 by r1 plus 1 by r2. And what are the values? So values are, mu naught value is 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 4. Current value is given as to be 10 ampere, and the value of the smaller one is 0.08, and the value of the bigger one is 0.12. If we were to solve this part, so magnetic field would come out to be 6.55 into 10 to the power minus 5 Tesla. So this is the value of the magnetic field. So what would be the direction? Because the current is flowing in the counterclockwise direction, so magnetic field would be out of the plane of paper. So it would be out of the plane of paper. So it would be outward. It would be outward of the plane of paper. Now, in the B part, what we need to do, we need to find what is the value of the force acting on the wire at the center due to the current in the circuit. So due to the current in the circuit, what is the value of the force in a wire which is placed at the center? So if we were to draw this situation, we can draw it like this. So for example, this is let's say this is our circuit, and the current is flowing in this counterclockwise direction, and due to this counterclockwise flow of the current, so there is magnetic field coming out of the plane of paper. Magnetic field, this is the value of the magnetic field which is coming out of the plane of paper. But what is the direction of current which is given? So direction of current which has been given is into the plane of paper. So into the plane of paper. So what would be the value of force? Force is IL cross P. IL cross P. So what would be the cross value? So the angle between V is going outward and current is going at this center, current is going inwards. So what is the value of the theta angle? Or what is the value of the theta angle? It would be 180 degree. And what is the value of sine 180 degree? It is 0, because cross product would be coming out. It could be written as ILB sine of theta. So the value would be 0. Value would be 0 due to the current in the circuit. Now what we need to find else? What we need to find? We need to find what is the value of the force acting on the arc AC, this arc AC, and the segment CD, and this segment CD, due to the current at the center. So due to the current at the center, what is the value of the forces here and the value of the forces here? So we can see this. Okay, now due to force, now we can write force due to wire, force due to wire at the center, okay. Now CD is something like this. So CD is like this. CD part is like this. Okay, CD part is like this, and the current is going into the plane of the paper. Okay, now what would be the direction of magnetic field due to current for the wire element CD? So direction of magnetic field would be in this direction.
it would be the direction of magnetic field, due to wire at the center. Now, what is the direction of current in this? Direction of current in the element CD, in the element CD is like this. So what would be the angle between I and B? Angle, clearly we can say that angle theta is here 180 degree. Why? Because current is moving in this way, magnetic field is moving in this way. So theta is 180 degree. So what would be the value of the force? What will be the value of the force for CD? Equals to IBL sine of 180 degrees, and it would be 0. So its value is 0. Now what we need to find? We need to find what is the force on this straight wire, like this. So what is the value of the force on this straight wire? It was not CD, but it was CA. It was written as CA and not, so it was CA. It is A and this is C. Okay. Now what we need to find? We need to find what is the force on this element CD. What is the value of the force? Value of the force on CD. We need to find this. So at the center, so this is the wire, and what would be the magnetic field? Magnetic field would be in this part. Is the magnetic field constant throughout this part? No, it is not constant. So we need to take an element. Let's say this is an element of thickness, let's say dx. Dx is the thickness of this element, and what is the value of the magnetic field at this element? So magnetic field due to a current carrying conductor could be written as, or force could be written as, F equals to I into B into dx for this small element. And what is the value of the magnetic field due to the infinitely long wire? So due to infinitely long wire, magnetic field could be written as mu naught I divided by 2 pi into r. So this is the value, 2 pi into r. 2 pi into r. What is r? R is the radial distance between the two wires, or we can write it, because we have used here dx, so we can write here as dx. We can write here as x. Okay, and multiplied by dx. Okay, now this is the wire of the circuit, and this is the wire due to the wire at the center. This is the current due to the wire in the circuit, and this is due to the current at the center. So this value, IC value, is given as to be 10. Mu naught value is 4 pi into 10 to the power minus 7. I value at the center is given as to be 10 divided by 2 pi, and then dx divided by x. So this is the part what we need to find. We need to find what is the value of force. So we need to integrate this. So integration of df would be given as f, and we can write this as, we can cancel this pi, this is 2. It would be 200 into 10 to the power minus 7 dx by x. If you were to integrate this part, dx by x, what is the integration? It is ln x. And what is the limit of x? So from where to where is x varying? So it is varying from this r1 distance to r2 distance. So we can put the limit as r1 to r2. So it would be 200 into 10 to the power minus 7 ln r2 minus ln r1. And if you were to put the values here, 200 into 10 to the power minus 7 ln 0.12 minus ln 0.08. So final answer would come out to be 8.1 into 10 to the power minus 6 Newton. So this is the final force on this part. Hope you have understood the solution. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कुलर रूप दे रखा है रेडियस आर का, और इसको क्या डायमीटर के अलोंग बेंड करा है, उसमें एक शेप दिया हुआ है ऐसा इस टाइप का. इसको क्या करा है, यहाँ से यूं करके एम पॉइंट तक ये एक मतलब सर्कुलर आर्क के 180 डिग्री सबटेंड करने वाला वन ऑफ द सेमी सर्कल के एम एन लाइज इन XY plane, other KLM in YZ plane with their centers at the origin. Current is flowing through each of the semicircle as shown in figure. यानी ये सर्कल है, डायमीटर के अलोंग इसको फोल्ड कर दिया है, तो ये इस तरह के हो गए. मतलब ये पॉइंट अगर K है, ये M है, तो ये K से M तक एक सर्कल पे है, और दूसरा है N के थ्रू, ये दूसरा है K से M, और इस बार L के थ्रू है. तो ये दो सेमी सर्कल्स हैं, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अब जो N वाला पार्ट है उसकी वजह से
जेड एक्सिस में वाई, इसकी वजह से वाई एक्सिस की जो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और इसकी वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा एल की वजह से। द चार्ज द पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज रिलीज्ड एट द ओरिजिन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू माइनस वी नॉट आई कैब, यानी ओरिजिन पे v इक्वल्स टू माइनस वी नॉट आई कैब से चार्ज पार्टिकल को छोड़ा। फाइंड द इंस्टेंटेनियस फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल पे इंस्टेंटेनियस फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट v क्रॉस b। तो यहाँ से हमारे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इसमें वेलोसिटी हमें गिवन है, चार्ज पता है हमारे को, तो यहाँ से हमारा फोर्स आ जाएगा। अज्यूम दैट स्पेस ग्रेविटी फ्री है, चलो ठीक है। तो इफ एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू आई जे के भी अप्लाई, यानी ये अब इसमें क्या किया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जिसका डायरेक्शन है बी नॉट जे के। डिटरमाइन द फोर्स F1 एंड F2 ऑन द सेमी सर्कल के एल एम के। अब इस करंट कैरिंग वायर पे हमारे को इस बार मैग्नेटिक फोर्स निकालना है ड्यू टू द फील्ड एंड द नेट फोर्स F ऑन द लूप। अब इस फील्ड की वजह से इन दो वायर के पोर्शन पे है ना मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, और एक बार जो नेट F जो कंप्लीट वायर पे फोर्स है वो निकालना है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे। अब सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये एक इधर है एक अपवर्ड है, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये होगा माइनस आई के प्लस जे के, तो इसका डायरेक्शन होगा जे के माइनस आई के मैग्नेटिक फील्ड का, जे के माइनस आई के। और इसको हम निकालेंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/2। तो ये हो जाएगा 4r, ये एक की वजह से हो गया, इंटू √2 करेंगे तो इनका रिजल्टेंट भी आ जाएगा हमारे पास। इंटू √2 कर देने से क्या होगा, ये 90 डिग्री पे इंटू √2 करने से हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमने इसको इंटू √2 भी कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब इसको लिखना है हमें, तो √2 म्यू नॉट अपॉन 4 को क्या लिखेंगे, पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई करंट हमारे को आई दे रखा है इसके अंदर, अपॉन 4 रेडियस इसकी आर है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें फोर्स निकालना है इसके ऊपर, एफ इक्वल्स टू क्यू, चार्ज क्यू वी है माइनस वी नॉट आई के क्रॉस √2 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन 4r, और इसका है माइनस आई प्लस जे के। ये हो गया। तो हम जो वैल्यूज है मैग्नीट्यूड उनको एज इट इज बाहर लिख लेते हैं, क्यू इंटू माइनस वी नॉट √2 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन 4r। अब क्या करेंगे, आई के इंटू आई के क्रॉस आई के 0 हो जाएगा, और आई के क्रॉस जे के क्या होगा, के के। तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा ये हमारा फोर्स हो गया। और यहाँ एक नेगेटिव साइन था, अगर वो हम इसको यहाँ पुट कर दें नेगेटिव साइन को यहाँ, तो ये ना हमें पता चलेगा कि फोर्स नेगेटिव जेड एक्सिस पे हमें फोर्स पता चल गया। तो ए पार्ट हो गया। अब इसमें दे रखा है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट जे के, यानी जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास इसका जिसका ये है माइनस आई के प्लस जे के, इसमें एक बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड और आ गया। डिटरमाइन द फोर्स F1 and F2 on the semicircle KLM and KNM due to field and the net force। अब क्या करना है कि ना, अब हम इस नए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो दो लूप है इनके ऊपर फोर्स निकालना है, और
नेट जो पूरा लूप है उस पर कितना फोर्स है वो निकालना है। तो हम इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लिखेंगे, वो होता है एफ आई। अब हम इस लूप पे फोर्स निकालेंगे और एक इस लूप पे फोर्स निकालेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बी जे के, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। अब इसमें एल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम इन दो लूप को लेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इतना होगा, ये होगा के से एम तक। अब हम इसमें के से एम तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लेते हैं। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। करंट आई है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी ये होगा। तो ये हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2r और माइनस के कैप, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा 2r माइनस के कैप। तो ये हो गया आई ब्रेकेट 2r माइनस के कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 बी नॉट जे कैप। तो इसको क्या लिखेंगे, के क्रॉस जे आई ब्रेकेट 2r इंटू 2 बी नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड 2 बी नोट नहीं है, सिर्फ बी नोट है, तो हम लिखेंगे 2r बी नोट। के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई, और एक माइनस पहले से ही है तो ये आई केब हो गया। तो ये हो गया बी नोट आई 2r। इस आई को कैपिटल ले लेते हैं, आई केब। तो ये हो गया फोर्स एक पे, और फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, एल क्रॉस बी। इस वायर पे फोर्स लगेगा इधर डायरेक्शन में। और अब इस वाले की वो इसका डिस्प्लेसमेंट के एन एम का भी है ना, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम है। तो उसका भी जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम है, के ये एल था ये एन है, तो एल की वजह से हमने निकाल लिया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ये जो डायरेक्ट रिजल्टेंट जो ये है, हम जब मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं तो इसकी वजह से जो फोर्स होता है वो इक्विवेलेंट होता है इस वाले। यहाँ पे अगर एक कोई इक्विवेलेंट वायर है जिसमें आई करंट कंडक्ट कर रहा है, सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, अब के एन एम इसका भी फोर्स सेम होगा, तो एफ के एल एम इक्वल्स टू एफ के एन एम। दोनों का फोर्स सेम है तो इसको भी लिख देंगे बी नोट आई 2r आई केब। अब दोनों का आई केब है तो दोनों का F1 F2 पता चल गया, ये हो गया F1, ये हो जाएगा F2। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F नेट, और दोनों आई कैप में हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 बी नोट आई 2r, तो इसको 4 कर देंगे r आई कैप। ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट। Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? A particle of mass m, charge q, is moving in a region where uniform electric and magnetic field is given as to be E and B. Okay, these are present. Now E and B are parallel to each other. At t equals to 0, V naught velocity V naught of the particle is perpendicular to E, and we need to consider that speed is very less than c. Now find the velocity v of the particle in term at the time t, and we must express our result in terms of t q m vectors v naught v vector, e vector, b vector, and the magnitude v naught, e and b. Okay, now let us first of all draw our situation. What is the situation? So the situation is like this. So for example, if we draw our coordinate axis, so what are different values? So it is given that b e and b are parallel to each other, okay, and at v naught is perpendicular to e. So we just define that, let's say this is our x direction, this is our y direction, and this is our positive z direction. Okay, this is the case. Now let's us assume that in this direction it is the particle which is moving. Particle is moving, let's say in this direction initially. This is the initial part. Okay, now what would be the direction of our E and B? So E and B are perpendicular. Let us assume that E is in the vertical direction, also B is in the vertical direction. Why? Because E and B are parallel to each other. So we say that this is our E, this is our E, and this is our B, and this is our what? This is our V naught velocity. Okay, now what would be the value of V at any time? We say that V vector at any time would be equals to Vx
in I direction plus Vy in J direction plus Vz in K direction. Okay, we can write it like this. Now, what will happen when the particle is moving? So, for example, if there is no electric force, for example, let us assume for a moment that there is no electric force. So, what is the direction of the magnetic force? So, magnetic force, we can get the direction of magnetic force as what? F would be equals to Q V cross B. Okay, Q V cross B. Now, what would be the value of V cross B? So, V is in the X direction and this B is in the Y direction. Okay, that means I cross J. I cross K is what? It is equals to K. That means at the initial instant, the magnetic force would be in this direction. Okay, just at the entry. So, magnetic force, this is the direction of our magnetic force. So, magnetic force is perpendicular to velocity. Okay, now we have on the field. Okay, we have just on the electric field. So, electric field would be in the upward direction. Now, due to this magnetic force which is acting perpendicular to the velocity, so this particle will try to move in a circle. It would be moving in a circle. Okay, it would try to move in this circle like this. Okay, and due to electric field, so this circle, so gradually it will be moving upward. So its motion would be like this. So we just draw its motion. It would be it enters like this, but its motion would be gradually. It would be like this. Okay, circular motion is due to what? Circular motion is due to the magnetic force, and upward motion is due to what? It is due to the electrical force. So upward velocity, how can we get the upward velocity? Because in the upward direction it would be the electrical force which would be acting. So we can say that in the upward direction, we just say that in Y direction, if we apply for Y direction, we can say that acceleration in Y direction would be the force in Y direction divided by the mass. Simple. So what is the force which is acting in the Y direction? It is just the electrical force which would be acting. So if Q is the charge, so we say that it would be Q into E divided by M. Okay. Now, if we apply our equation of motion, we say that at the starting, so it is not having any velocity in the Y direction. That means velocity in Y direction is 0. It is having velocity only in X direction. So we can say that at any instant of time, our velocity in Y direction at any time would be equals to Ay into T. That means QE divided by M into T. Okay, this we get the velocity in the Y direction. Let us come to velocity in X and Z direction. Okay, now let us assume that at any instant of time, it has traversed a distance like this. It is moved like a distance z, this theta. So basically, I'm just drawing it in the XY plane. So if we draw it in the XY plane, if we draw in the XY plane, let us select a plane. Let's say this is our XY plane. Sorry, XZ plane. So this is our X. We say that this is our X and this is our Z. Okay. So we are viewing this from the top. If we view this from the top, what we see? So we see this type of a shape. So it would be just moving like this. For example, at an instant of time t, it is at this location. Okay. So if we draw, for example, from here to here, if we draw a perpendicular, at this point, so from here, if we draw a perpendicular like this, okay, and from here, if you draw perpendicular like this, these perpendicular are drawn with respect to velocity too. So velocity is let's say v naught. So for example, if this angle is theta, so what will be this angle? This angle would also be theta. How? For example, if we draw a line, so this angle is theta, so it would be vertically opposite angle. This is theta, so this is tangent, so this would be 90 minus theta. That means this is theta. So what is the component of velocity in this direction? It would be v naught into cos of theta. What is the component of velocity in this direction? It would be v naught into sine of theta. Okay, so this velocity is in which direction? X direction. So we say that velocity in our X direction would be equals to v naught cos of theta I cap, and velocity in our Z direction, because this is our Z direction. Okay, it would be equals to v naught sine of theta into K direction. Okay, now we know everything, every velocity, just we wanted to know the value of theta. So what is the value of theta? So let's say theta would be equals to omega into t. We see that is if omega is the angular frequency, or it is the angular velocity of the revolution, then theta would be equals to omega into t. Now what would be the value of omega in case of a circular motion? So omega value, we know that it is equals to qb divided by m into t. So this is the value of our theta. So we know theta itself. Okay, we know the velocity. Now what is to be done? We just write the expression. So we are just writing the expression for our velocity vector. It is, we have just written vxi plus vyj plus vzk. Now what is the value of vx? Vx value we have just derived. It would be cos theta, and theta value we know that qb divided by m into t I cap. What is the velocity y? We have derived velocity y as q
it would be QE divided by M into T. So it would be QE divided by M into T. It is in the J direction, and velocity Z, it would be V naught sine of theta. Theta value is QB divided by M into T in the K direction. Now what would be the, because we need to find, we don't need to find in terms of IJK, we need to find in the terms of given parameter V naught B and these things. So how can we write our I vector? So I vector would be equals to, because we know that x velocity, this is in the x direction. So what we can do, we can just divide the velocity in the x direction, velocity in the x direction with the magnitude of the velocity. So what is the magnitude of the velocity in the x direction? It was, we just see in the initial situation. So velocity vector is given as to be v naught, and if we divide it by the mod, so it would be v naught vector divided by mod of v naught. So we can write our I value would be equals to v naught vector divided by mod of v naught. Okay, this would be the I. Now what would be the J? J, we can say that because in electric field is in the J direction, so we can say that J vector would be equals to E vector divided by mod of E vector. So this is how we write the unit vector. So this would be equals to E vector divided by mod of E vector. Okay, now how to write our K, because it is also K cap. How to write our K cap? Now in the K cap we see that this is our force is acting in the K direction. At the initial instant it is acting in the K direction. So what we can do, we can just divide our force vector with the magnitude of the force. So force vector is what? Force vector is Q V cross of B. Now if we divide it by, this is basically V naught, if we divide it by the magnitude of this, so magnitude of this would be V naught into B, and Q would be gone. So it would be V naught cross B divided by V naught into B. So this would be the final expression. So we just need to put the value of I here. So this is the final expression for velocity, where I is this, J is E by E vector by mod of E, and K vector is, this K cap would be equals to V naught cross B divided by V naught into B. So this is all we have found. So hope you have understood this explanation. Thank you.